student S. In that case, memory is allocated something like this. One is for roll number, second is for percentage, and third one is for next. Here we can store only address. In roll part, we can store integer value, and here we can store float value. When I say student star S, that means pointer. That means a memory is allocated for S where I can store only address. So I cannot store integer value, I cannot store float value. The way we have this address part, वैसे ही we have this single address part. So I cannot store values in this. And if I want to store values in this S, okay, second S. So this is case 1, this is case 2. If I want to store actual data, okay, a node, suppose one student's information into second case S, in that case what I have to do, I have to first of all allocate memory. I have to allocate memory for what? Memory for object of this class. जो भी member है class के, जितने member है उसके लिए मुझे memory allocate करनी पड़ेगी. And how I can do that? For that we can use new operator. New in bracket, new student round bracket. So this part will allocate memory like this, wherein one part is for roll number, second part is for percentage, third part is for next, and it is allocated at say address 200. Then this new student will return this address. New का काम क्या होता है? मेमोरी एलोकेट करना है, और ये जो मेमोरी एलोकेट हुआ है वो किस लोकेशन पे हुआ है वो एड्रेस रिटर्न करता है. So that address I want to store in S. Therefore, this 200 will be stored here. Are you getting? That means now S is pointing to this memory location, or we can say it is pointing to this memory. And how do I access this RPN? We can write like this: S arrow R is equal to 15. Then I can store 15 here. S arrow, that means roll. S arrow percentage is equal to 80.78. So 80.78. S arrow next is equal to null. So here it will be null. Like this. So understand the difference between this star and without star. Is this clear? Object Yes, sir. and pointer. Okay, good. Then now we will move to the next part. So in yesterday's lecture last lecture, we have seen how to create a linked list. So what we do in that case, first of all, we declare in main function what we do is we create head. Okay, so student star head. So this one is same as that of the this. Okay, so memory will be allocated for this head, which can store. क्या store कर सकते हैं हम इस head में? Address, only address. We cannot store any student's information into this. And if I want to store information into this, first of all we have to allocate memory. तो memory allocate कैसे करेंगे? तो उसका एक logical flow हम देखते हैं. तो first of all what we will do, we will take a temporary pointer to which we will allocate memory with the help of new. We will accept values in this. And then we will initially this head is null because we don't have any values.
Initially, this head is null, so it consists of null. So first of all, we will allocate memory for temp. We will accept value in temp, and then we will check whether head is null. Yes, if head is null, then whatever address of temp is there, which is 200, that we will store in head. That means head is pointing to this. That means this is now, instead of temp, we can call it as a head, because head is pointing to this location. Again, if I want to add one more node, what I have to do, again we will allocate memory at some random location with the help of new. We will call it as a temp. We will accept new values. ठीक है, वैल्यूज एक्सेप्ट करते वक्त हम क्या करेंगे, टेम्प रोल नंबर, टेम्प परसेंटेज और टेम्प का नेक्स्ट नल रहेगा. नाउ वी विल चेक, इज हेड नल? हेड नल है क्या? Say yes, no. No, it consists of address 200. That means we have some values, we have a list with us. तो हम क्या करेंगे, अभी हेड से स्टार्ट करेंगे, जब तक लास्ट में नल नहीं आता है तब तक चेक करते जाएंगे. सो 200 के नेक्स्ट में नल है क्या? यस, नल है. तो अभी जो टेम्प हमने एलोकेट किया है 300, वो एड्रेस हम डालेंगे यहाँ पे. दैट मीन्स दिस लिंक विल बी क्रिएटेड. Next time, again, you allocate memory for temp, say at location 400, accept new values. And now again start from head. Head null है क्या? नहीं है. तो head के next में क्या है? Some value. Go to that 300. Yes, 300 के next में क्या है? Null. तो 300 के next में ये जो temp हमने allocate किया था उसका एड्रेस यहाँ पे डाल देंगे. So it will be pointing to this. In this way, we will create a linked list. Any doubt in this? No, sir. No, sir. So when I want to display this linked list, what I will do, I will take one temporary pointer. ठीक है, जैसे यहाँ पे head है वैसे ही stood star t. t is equal to head. ठीक है, t is equal to head. So t में क्या रहेगा सबसे पहले? What is there in head? No. In this list. In this list, 200, right? So t में भी क्या आएगा? 200 आएगा. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब तक ये t नल नहीं होता है तब तक हम डिस्प्ले करते रहते हैं. तो t is right now 200. So that means it is pointing to this memory location. So display this 11 and 80. And then go to next. T is equal to t pointer next. ये हमने कल देखा था कैसे होता है. तो t pointer next is 300. 300 किस में स्टोर हो रहा है? फिर से t में स्टोर हो रहा है. तो अभी वो 300 की वैल्यू डिस्प्ले करेगा, विच इज 22 एंड 90. अगेन उसका नेक्स्ट नल है क्या? नहीं है, उसमें 400 है. तो वो t pointer next, which is 400, it will be copied into t. Now it will go to 400. 400 की वैल्यू डिस्प्ले करेगा. ठीक है, अब temp के नेक्स्ट में नल है क्या? यस, नल है. दैट विल बी कॉपीड इनटू t. t नल हो गया. टिल जैसे ही नल हो जाता है, वी विल स्टॉप हियर. आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. Okay, fine. So now we will see how to insert node at first or last. So for that, what we will do is, just a minute. So consider this is my linked list wherein I have 3 nodes.
Suppose 11, roll number 22, roll number 33. Percentage is 80, 85, 90. Okay. And these are the memory addresses which I am writing below that rectangle. So if second node is 200, तो 100 के next में 200 आने वाला है. That means it is pointing to this memory location. 200 के next में 300 है address. So it is pointing to this. We don't have anything in this, so null. So this is our linked list. So this is our head. That means head में अभी क्या है? 100. That's why it is pointing to this. ठीक है. So if I say head arrow roll number, what value I will get? Sir, Yes. can you please repeat? Head arrow roll number. Head arrow roll. कौन सी वाली? 80. 11. 11. 11. 11. ठीक है. So what I am doing here, now let's see how to access all these values. Roll number, percentage, next. Roll number, percentage, next. Roll number, percentage, next. So when I say head pointer next means what? 200. Correct. ठीक है. Head arrow next is 200. Head arrow roll means what? 11. 11. Similarly, head arrow next arrow next. 300. 300. ठीक है. So head arrow next is, we will go step by step. Head arrow next is 200. So it is something like this. 200 arrow next. तो 200 के next में क्या है? 300. So this will be 300. Very nice. Similarly, head arrow next arrow percentage. 85. 85. Correct. Because head pointer next is again 200. और 200 arrow percentage is 200 के percentage में 85 है. Okay. Now, if I say, now you tell me, I want to display 90. What should I write with respect to head? Head next percentage. Head, arrow next, and percentage. Let's see. Head arrow next is 200. 200 arrow, it is as it is, I'm writing. Again, replacing 200 next. 200 के next में क्या है? 300. 300. So it is 300. 300 arrow percentage means again 300 के percentage में क्या है? 90. So it is displaying 90. Perfectly nice. चलो सबको समझ में आ रहा है ये. Now again, this time insert at first. As you all know the concept of pointer next and on. This is head. 100 again 11,
80, 200, $22, 90, 85. So it is like this single linked list. Now here I want to insert at first. So what we will do, यानी जो हमारा फर्स्ट नोड है 11 उससे पहले भी हमें ऐड करना है इंसर्ट एट फर्स्ट. सो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? न्यू नोड क्रिएट करना पड़ेगा. बिल्कुल सही, न्यू नोड क्रिएट करना पड़ेगा. तो हम उसे या तो न्यू नोड कहेंगे, ठीक है, NN, और यू कैन कॉल इट एज अ टेम्प एंड यू एलोकेट मेमोरी फॉर दैट, राइट? Yes, sir. So here I'll write like this: student star NN is equal to new student, right? Now once we have that, then what we have to do, again suppose this is at say 400, ठीक है, तो NN में क्या आएगा? NN में आएगा 400. Do you agree? Yes, sir. Okay, great. Now what we have to do, we have to accept values. So get it. In short, I am writing here. Otherwise, you will write C in C out statements. NN roll is equal to 5. NN percentage is equal to 50. NN pointer next is equal to null. So this is the standard procedure wherein we accept values first and we will assign null at the end. Now this we have to assign as a first node. तो क्या करना पड़ेगा? NN next equal to head. NN करेक्ट. NN के नेक्स्ट में यानी यहाँ पे हमें सबसे पहले हेड में जो भी है, हेड में क्या है अभी 100. तो इफ आई कॉपी दैट हियर, यानी NN के नेक्स्ट में अगर मैं हेड कॉपी करता हूं तो हेड की वैल्यू क्या है 10, सॉरी 100. So 100 will be copied into next. So it is 100 here. That means it is pointing to this. But still head में वैल्यू क्या है अभी भी 100. 100. It is pointing to this node only. So we need to point here. तो क्या करना होगा? हेड की वैल्यू चेंज करनी होगी या न्यू नोड की वैल्यू चेंज करनी होगी? हेड की. हेड की. सो हेड की वैल्यू चेंज करेंगे और उसमें क्या डालेंगे? न्यू नोड. New node. Correct, correct. Very nice. New node. So new node is 400. So 400 will be copied into head. तो हेड में जो यहाँ पे 100 था वो 400 हो जाएगा. That means it is pointing to this. Very nice. सबको समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. Similarly, if I want to add it to the last point, तो क्या करना होगा? यहाँ पे ऐड करना है लास्ट में. Okay, now I won't repeat this part. इतना पार्ट तो सबके लिए कॉमन ही है. नया नोड एक्सेप्ट मेमोरी allocate memory for new node, get the values, assign null to the next, and in order to assign it to the last node, what we have to do? We have to start from the first node. So I'll take one temporary node, temporary pointer T, to whom I'll assign head, while T arrow next is not equals to null. क्योंकि हमें यहां तक जाना है ना, तो हेड अभी इसे पॉइंट कर रहा है, तो यही टी भी हो जाएगा. टी के नेक्स्ट में नल है क्या? No. टी इज राइट नाउ 100. सॉरी,
400, t is 400. तो t के नेक्स्ट में क्या है? 100. 100. 100. So condition will be checked while के जगह पे. while के यहाँ पे क्या होगा? t pointer next which is 100. Sorry, हाँ, t is 400 and t pointer next. When t is 400, t pointer next is 100. ठीक है. So here t pointer next 100. 100 is not equals to null. So what it will do? It will go to the next. So जो भी t pointer next में, it will be copied into t. Now t is 100. t pointer next क्या रहेगा? 200. Very nice. 200. ठीक है. Again t pointer next which is 200 is not equal to null. True. So t pointer next में जो भी है, it will be copied into t. So it will be 200. Again 200 है. अगर t 200 है तो t pointer next क्या होगा? 300. Again condition check. 300 is not equals to null. True. So t pointer next will be copied into t. So it will be 300. Again अगर t 300 है तो t pointer next will be null. So t pointer next null is not equal to null. False. Therefore it will come out of this loop and t is pointing to 300, right? t is pointing to 300. So t is here. अभी हमें क्या करना होगा? हमने मेमोरी एलोकेट किया है, वैल्यूज ली है, सब कुछ किया है और t अभी यहाँ पे है. T के नेक्स्ट में न्यू नोड की वैल्यू डालनी पड़ेगी. Totally. That's it. So here जो भी न्यू नोड रहेगा say 500, तो it will be 500 pointing like this. You got this? Yes, sir. Now insert in between. We have a list. Now I won't add all values. I'll just add addresses, nothing else. Again say 100, 200, 300. This is head. Now suppose, चलो रोल नंबर सिर्फ ऐड कर देता हूँ. 22, 23, 24. Now we have to add in between. So in between यहाँ पे we have two options. Either you accept the, what we can say, the roll number after which you want to enter or insert that record, or what you can do is, yes, or what we can do, एक तो रोल नंबर एक्सेप्ट करो या फिर पोजीशन एक्सेप्ट करो. Position. आफ्टर फर्स्ट नोड, आफ्टर सेकेंड नोड, आफ्टर थर्ड नोड. ठीक है. So whatever easy for you. Suppose here I am inserting after roll number. ठीक है. So first of all you will accept one R. Suppose if it says after 23. Insert record after 23. So for that again we have to traverse. बरोबर ना? जैसे पहले हमने ट्रैवर्स किया था वैसे ही. तो पहले का जो कोड है वो
यस, ये जो पहले का कोड है इसमें जो हमने लिखा था t इज इक्वल टू हेड वाइल लूप, वो सारा का सारा वैसे ही, बस कंडीशन क्या चेंज होगी इसमें, या फिर कंडीशन क्या चेंजेस करने पड़ेंगे यहाँ पे, ये तो पता है आपको कि इट विल टेक यू फ्रॉम हेड टिल लास्ट नोड. So what changes we have to do here? Instead of while loop, we will use for loop and will iterate till that r. और कोणाला काही अजून सोपं वाटतंय का? इथे काय करतोय आपण टी इज इक्वल टू हेड फर्स्ट पासून स्टार्ट करतोय आणि लास्ट पर्यंत एक शेवटचं स्टेटमेंट एक्सक्लूड केलं तर ते वाईल लूप काय करते, फर्स्ट पासून लास्ट पर्यंत ट्रॅव्हर्स करते आणि आपल्याला सपोज हीच डायग्राम आहे आणि आफ्टर 22 इन्सर्ट करायचे रेकॉर्ड, तर काय करावं लागेल? आत एक इफ स्टेटमेंट लावा लागेल की इफ टी डॉट डेटा इज इक्वल टू रोल नंबर देन रिटर्न नेक्स्ट. व्हेरी नाईस, ऍब्सोल्युटली. म्हणजे इन्स्टेड आता हाय लूप तर फर्स्ट पासून स्टार्ट पर्यंत जातेच. एकच मिनिट ना. Right. So here we have 23. So again, I'll write code part here. P is equal to head and while P pointer next, instead of arrow we will call it as a pointer, is not equals to null. We are going to the next node. But here हर बार हम एक एक नोड को तो विजिट कर ही रहे हैं ना, तो यहीं पे हम चेक करेंगे क्या इफ टी एरो रोल जो हमें चाहिए वो किसमें है, ये टेम्पररी वेरिएबल में, तो चेक करेंगे वेदर इट इज इक्वल्स टू आर. इफ सो क्या करना पड़ेगा? ब्रेक, राइट. वी हैव टू ब्रेक दिस लूप. ठीक है, सपोज टी इज हियर, तो टी इज हियर, टी पॉइंटर नेक्स्ट इज व्हाट? टी इज हियर फर्स्ट. दिख रहा है क्या? टी फर्स्ट में यहाँ पे 200. 200 is not equals to null, so it will come inside and it will check T arrow roll. What is T arrow roll right now? 22. 22 is equals to R? No. So वो break execute नहीं होगा. T is equal to T pointer next. So T will be here. Second node. Again, T pointer next is not equals to null. True. So it will come inside. T arrow roll. Is it equals to R? Yes. So Yes, sir. ठीक है, ब्रेक हो जाएगा और वाइल के बाहर आ जाएगा. अभी यहाँ पे क्या करना है, इसके बाद हम जो भी है वो न्यू नोड का वो करेंगे. न्यू नोड इज इक्वल्स टू एलोकेट मेमोरी, गेट वैल्यू, रोल, गेट परसेंटेज. ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, यानी इट इज लाइक दिस. न्यू नोड से 800 को मेमोरी एलोकेट हुआ है. वी हैव रोल नंबर, परसेंटेज एंड नेक्स्ट. हमने रोल नंबर एक्सेप्ट किया 78, परसेंटेज भी एक्सेप्ट किया और नेक्स्ट में नल है. अब हम क्या करेंगे, टी इज हियर. यस, आफ्टर 23 we have to add 78.
चुकू दे बोला. Sir, T next refers to new node. T next, sorry, T arrow next is equal to new node. बर. तो इससे क्या होगा? ये इससे क्या होगा? What is new node? New node की वैल्यू क्या है? 800. 800. 800 will be copied where? T pointer next. So this will be 800. ठीक है. तो अभी यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है? ये 800 तो पॉइंट कर रहा है यहाँ पे. That means it is pointing to new node. But this link is lost. This in between link is lost. और इसके नेक्स्ट में तो नल ही है. यानी इसका मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर ये सेकेंड नोड है, एंड दिस इज योर थर्ड नोड. व्हाट अबाउट दिस? दिस इज लॉस्ट. तो क्या करना होगा सबसे पहले? पहले न्यू नोड नेक्स्ट इज इक्वल्स टू टेम्प नेक्स्ट करना होगा. T next. Very nice. So before this statement, we will write new node next. यानी यहाँ पे जो भी T के नेक्स्ट में, which is previously 300. ठीक है. So this 300 will be copied into next. So this link will be established first, and then you copy new node into this. So this link will be established. I hope you are getting this. तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? Suppose this is our T, this is new node, and this is last node. 200. Here we had 300, and this is 800. तो previously the link was like this. तो सबसे पहले जो खाली जगह है वो पहले फिलअप करो. यानी ये जो भी 300 है, you first copy it here. So this link will created. This link will be created. उसके बाद ये जो बीच वाली लिंक है वो निकाल के यहाँ पे असाइन करो. तो ये जो फर्स्ट स्टेप है, ये कैसे करेंगे? 300 कहाँ से मिलेगा? यहाँ से मिलेगा. सो T का नेक्स्ट NN के नेक्स्ट में कॉपी करो. वही हमने किया है यहाँ पे. उसके बाद T के नेक्स्ट में NN का एड्रेस डाल दो. दैट मीन्स दिस लिंक विल बी क्रिएटेड. आर यू विथ मी? हेलो, समझ में आ रहा है सबको? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. अब कोई वॉलंटरीली मुझे डिलीशन का कोड बताएगा? Yes, sir. Yes, let's do this again. Always imagine this diagram, then only you will be able to write this linked list program. ठीक है. सपोज रोल नंबर इज 1 2 3 4 एंड नाउ आई वांट टू डिलीट थर्ड रोल नंबर रिकॉर्ड. थर्ड ने एडमिशन कैंसिल किया, तो क्या करना होगा? सपोज दिस इज आवर हेड. दैट मीन्स हेड कंसिस्ट ऑफ, हेड में क्या वैल्यू रहेगी? 100. यस. कैसे करेंगे? So we will first define a random pointer and assign it to head. करेक्ट. टेम्पररी. ठीक है. वी विल असाइन हेड टू दैट पॉइंटर. Yes, sir. Good, very good. Then Then while temp
temp's next its roll number will not be equal to the first we'll take the value which we have to delete. Correct. Suppose the roll number which I want to delete, I am accepting in R by C in C out. But here I am directly assigning 3 because I want to delete this roll number. I want to delete a record, ठीक है, जिसका रोल नंबर R में है. फिर आगे. So T arrow next arrow roll number is not equal to R. We will iterate. We'll do temp like T equal to T next. Correct. Then But after. what, yes, very nice. But my doubt is, what if R is equals to 33? Do we have that value in our list? No, sir. Then we have to put a check at first. What check? बरोबर है. It will be like if that R is within the, then we have to define another array for recording No. the values So of what we R. will do? Yes. Can anyone suggest solution? काही solution तुमच्या डोक्यात येते का? So we will traverse the whole linked list. काय बरोबर. In that while loop, we will set if condition. येस, म्हणजे आपण स्टार्ट तर करणार आहे फर्स्ट नोड पासून. वी विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट नोड अँड वी विल गो टिल लास्ट नोड. इफ द गिवन रोल नंबर इज 33. तुम्हाला येतो का डिस्टर्बन्स आवाजचा? कोणीतरी नवीन बुलेट आणली आहे बहुतेक कॉलेजमध्ये. ओके, ग्रेट. Then it's good. So what we have to do is, we are starting from first node. We will go till last node. If that in between, if the given roll number is 33, then we don't have that roll number in our list. यानी वो कहाँ तक जाएगा? Last तक जाएगा. तो जे Sir, then using and will also put that while temp T next is not equal to null in the while condition using and operator. नंबर हमारे पास है ही कि लास्ट. यस, काय फर्स्ट से लेके लास्ट तक जाएंगे. विजिटिंग 1 by 1. अब इसके बीच में हम क्या करेंगे? जैसे पहले किया था वैसे यहाँ पे भी करेंगे. इफ T arrow roll is equals to R, then break. उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे? नीचे यानी सपोज अगर T में 3 है, ठीक है, तो वो ब्रेक करेगा. ब्रेक करने के बाद व्हाइल लूप के बाहर आएगा. उसके बाद हमें क्या करना है? और एक पॉइंटर डिफाइन करना है and that will be equal to T next. T next. ओके, फिर उससे आगे सर ते इफच्या ती कंडिशन लावली इफ टी नेक्स्ट इज इक्वल टू रोल नंबर तिच्या नोड पर्यंत जाऊ शकतो आणि मग लिंक क्रिएट करू शकतो. बर, तसंही चालेल. किंवा आता आपण टी सपोज इथे याच लूप मध्ये आपण बघूया काय होते. राईट नाउ टी इज हेड, ठीक आहे, फर्स्ट नोड. टी पॉइंटर नेक्स्ट इज नल, नो, ठीक आहे. सो इट विल चेक T arrow roll which is 1, the first node. 1 is equals to 3, no. T pointer next. T is initially 100. T pointer next 200. T arrow roll 1. T is equal to T arrow next. T arrow next is 200. T arrow next is 200. That will be copied into T. Now T pointer next is 300, not equals to null, true. T arrow roll, T is 200, so 200 roll is 2. 2 is equals to R, no. So again T pointer next is 300, that will be copied into T. Again T arrow next is 400, 400 is not equals to null. जमतंय का? सगळ्यांना लक्ष देते का मी कसं ट्रॅव्हर्स करतोय? Yes, sir. ठीक आहे. अगेन T arrow roll, that is 300 arrow roll is 3 is equals to R,
यस ट्रू, तो ब्रेक करेगा। ठीक है, यानी जब टी यहाँ पे रहेगा, टी जब यहाँ पे रहेगा तब वो ब्रेक करेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, Then we have to define a pointer and make it equal to t. ओके बेसिकली जब मुझे ये 3 डिलीट करना है तो एक्चुअल में इस डायग्राम में क्या चेंज करना होगा, लिंक बनवायला लागेल सर टू मागच्या टू ची लिंक 4 ला करावी लागेल. म्हणजे मला काय चेंज करावं लागेल, टीच्या आधीचा पॉइंटर टीच्या आधीच्या पॉइंटरच्या ऍड्रेस मध्ये कोणाचा ऍड्रेस टाकावा लागेल, टीच्या नंतरच्या पॉइंटरचा. किंवा नेक्स्ट म्हटलं तरी चालेल का, हो येस सर. बरोबर. टीचा नेक्स्ट इज 400, ते 400 जर मी इथे टाकले तर ही लिंक अशी क्रिएट होतीये, बरोबर ना. येस सर. करेक्ट. मग मी काय म्हणतो आता इथे आपण 2 पॉइंटर घेऊ. कशासाठी, एक जो 1 नी पुढे जाईल, कारण मला याचा ऍड्रेस अपडेट करायचा आहे ना, आणि त्याचा ऍड्रेस अपडेट करायचा आहे तर मला 2 पॉइंटर लागतील. एक जो पुढे जातोय टी and 1 pointer which is following it. Then only I will be able to update this address. I can say T1 arrow next is equals to T1 arrow next is equals to T arrow next. बरोबर आहे का, हे का चुकतंय काही, काय वाटतं तुम्हाला, मी जे स्टेटमेंट लिहिलंय T1 arrow next is equal to T1 pointer next, हे बरोबर है का, येस सर. ठीक है, ये तो हो रहा है. अब हमें क्या करना है कि T1 एक स्टेप पीछे से चलना चाहिए, सही है ना. तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले परत लूप ट्रॅव्हर्स करावा. बरोबर बरोबर. पण मग आपण इथेच काय करणार, या एरियात, तो आपण इथे लिहू. सुरुवातीला आपण काय करणार, T1 इज इक्वल्स टू हेड म्हणणार आणि T इज इक्वल टू हेड पॉइंटर नेक्स्ट, बरोबर. म्हणजे T1 कुठे राहील, इथे, आणि टी कुठे राहील तर इथे, बरोबर. येस सर. मग फक्त याच्यात आपल्याला एक काळजी घ्यायची आहे की हेडला अगोदर चेक करावं लागेल. हे सगळं करायच्या अगोदर आपल्याला चेक करावं लागेल की हेडची व्हॅल्यू आणि रोल नंबरची व्हॅल्यू सेम आहे का. सेम असेल तर मग हे सगळं करायचंच नाही. म्हणजे if T1 arrow roll equals to R असं असेल तर आपल्याला इथं चेंज करावं लागेल, बरोबर आहे ना. आणि जर नसेल तर मग हे जे काय आपलं खालचं लिहिलेलं आहे आपण ते तसं कंटिन्यू करायचं. येते का लक्षात. बरं ठीक आहे, आपण आता लॉजिक समजून घेऊ, प्रोग्राम आपण लिहू नंतर टाईप करून. आणि हे लॉजिक तर कळलंय ना, T1 फॉलो करायचं आहे आणि टी पुढे न्यायचं आहे. ओके. Yes, sir. Once we create that new link, whatever this T is there, we have to free it. Free T so that memory can be used by any other program. उसका प्रोग्राम हम बाद में देखेंगे, कोई उसका ये प्रॉब्लम नहीं है. चलो, और लिंक लिस्ट में कुछ चाहिए आपको. अपडेट तो बहुत आसान है. अपडेट में हम क्या करेंगे, सेम, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट नोड, वी विल गो टिल द लास्ट नोड. इन बिटवीन इफ टी पॉइंटर रोल इज इक्वल्स टू आर, तो देयर इटसेल्फ इंस्टेड ऑफ ब्रेक हम क्या करेंगे, वहीं पे न्यू वैल्यू लेंगे और अपडेट कर देंगे, बरोबर ना. हो, नाही कळतंय, नाही कळत. येस सर. Yes, sir. ग्रेट. बरं, आतापर्यंत जे काही आपण पाहिलंय, व्हॉट एव्हर वी हॅव सीन, काही डाऊट आहे का कोणाला.
सर आता आपण जो कोड केला त्याच्यामध्ये दोन्ही पॉइंटर्सला ट्रॅव्हर्स करायला लावण्या एकच मिनिट हा. हम्म. सर जर आपण R ची व्हॅल्यू 1 एंटर केली तर मग कसं डिलीट करणार? नाही म्हणून तर म्हटलं ना आपण आता इथेच जे सेकंड लाईन आहे ना तेच आपण तिथेच चेक करतोय ना. हा सर आय वॉज सेइंग की दोन्ही पॉइंटर्सला ट्रॅव्हर्स करायला लावण्यापेक्षा आपण टी जर त्या पॉइंटरच्या आधीच्या पॉइंटर पर्यंतच ट्रॅव्हर्स केला आणि मग नंतर एक न्यू नोड डिफाईन करून दॅट विल बी इक्वल टू टी इज नेक्स्ट अँड देन टी नेक्स्ट इक्वल टू टी नेक्स्ट नेक्स्ट आणि मग डिलीट टी असं केलं तरी पण होऊ शकतं ना? नाही ना, कसं होईल? परत सर त्याच्यात 2 कंडिशन येतील. एक जर फर्स्ट इंडेक्सचा एलिमेंट डिलीट करायचा आहे हम्म. तर आपल्याला वेगळं लिहावं लागेल, म्हणजे इफ एल्स कंडिशन लावावी लागेल. आणि जर नेक्स्ट सेकंड थर्ड पासून करायचं आहे तर फॉर लूप लावून आपण त्या पॉइंटरला जो आपण सेकंड पॉइंटर डिनोट करू त्याला त्याच्या ज्या इंडेक्सला डिलीट करायचं त्याच्या आदली जी इंडेक्स आहे म्हणजे थर्ड जर डिलीट करायचं आहे तर सेकंड पर्यंत आणायचं. आणि जर तिथे टी आहे सेकंड पोझिशनवर तर टी नेक्स्ट चा जो डेटा आहे तो आपण समथिंग एका व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर करून घेऊ आणि टी नेक्स्ट इक्वल्स टू टी नेक्स्ट नेक्स्ट. येस सर. आणि मग डिलीट टी. नाही delete. त्या केस डिलीट टी नाही ऍक्च्युली डिलीट ते व्हेरिएबल जे आपण असाइन केलंय. नाही हे बघ कसं होतंय, समजा हे इथं आहे. आपल्याला हा मिडल डिलीट करायचा आणि हे आपलं लास्ट नोड आहे बरोबर. तर आपल्याला ज्यावेळेस तुम्ही म्हणताय की आपण टी इथेच ठेवायचा बरोबर. हा येस सर. टीच्या नेक्स्ट म्हणजे याच्यामध्ये टिक केलेल्या याच्यात टीच्या नेक्स्ट मध्ये जो काही ऍड्रेस आहे तो आपण टीच्या नेक्स्ट मध्ये घ्यायचा इथे. हो येस सर. बरोबर. हो आणि म्हणजे आता हे कोणाला पॉइंट करतंय, हे याला पॉइंट करतंय करेक्ट. येस. म्हणजे हा नोड लॉस्ट झाला ना, त्याचा ऍड्रेस नाही सर, मग त्याच्या आधी ती लिंक क्रिएट करण्याच्या आधी अजून एक पॉइंटर डिफाईन करून ठेवायचा आणि त्याला त्या नेक्स्टची व्हॅल्यू देऊन ठेवायची. येस तसंही चालेल. म्हणजे जे काही आपण करणार आहे त्याच्या अगोदर म्हणजे ही जी नवीन लिंक क्रिएट करतोय त्याच्या अगोदरच आपण हा सपोज T1 मध्ये घेतला बरोबर ना. येस सर. हो येस सर. करेक्ट. येस दॅट विल ऑल्सो वर्क. ठीक आहे. सो व्हॉट वी विल डू बिफोर क्रिएटिंग this link, first of all we will copy this node's address into T1 and then we will create this new link. Once we create this new link we will delete or free T1 बरोबर. येस सर. ग्रेट. ते पण बरोबर. येस सर. चालेल. अजून कोणाला काही डाउट और किसी को कुछ डाउट है? नो डाउट. नो सर. बोला, कोणाला काही डाउट आहे का? ठीक है. If no doubt then you can start writing this program. ठीक है. इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैं आज क्लासरूम पे डाल दूंगा. We stop here then. येस सर. Okay, ठीक है, चलो. Bye. If you have any doubts, feel free to ask me. I'll be here for 2-3 minutes. Otherwise, you may leave. लीव करताना जरी फास्ट करा, जॉईन करताना पण फास्ट करत नाही, लीव करताना पण फास्ट करत नाही. चला. थँक्यू सर. थँक्यू फॉर युअर कोऑपरेशन. तुम्ही बोललात म्हणून होतं हे सगळं. डबल लिंक लिस्ट वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर. इन दैट केस हम ये सब देख लेंगे या फिर
एक सर्कुलर लिंक लिस्ट देखेंगे, उसके बाद डबल लिंक लिस्ट देखते हैं.